So hello everyone and welcome to Career Launcher. So in today's class, we are going to discuss a very important topic that is Government of India Act 1935. Now you will be thinking why I'm asking this, why I'm discussing this, because first of all, we have seen previous year questions from here. Second, if you see the CLAT 2025 paper, they are asking questions from NCERT. So they have given chapters, they have given passages from NCERT history chapters. We'll show you. Okay. So and they had talked about civil disobedience movement. ये question पूछा था अभी. ठीक है. That is why the important chapters or the important topics which are important in the modern Indian history or Indian national movement we'll be discussing. And one of the thing is Government of India Act 1935. और मैंने आपको बताया है, मैंने कई बार बताया है कि majority of the things it is said कि almost 80% or 85% of Indian Constitution is borrowed from Government of India Act 1935. Some say कि 70%, 60%. मतलब सबसे ज्यादा अगर किसी चीज से बोरो किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तो यहीं से, ठीक है. सो द मैक्सिमम थिंग एक्चुअली वी हैव बोरोड in Indian Constitution is actually from Government of India Act 1935. So when we'll discuss it, you will realize the similarity which is there in our Constitution also. Okay, we will compare it also. We'll give you an idea. Yes. Good evening. Am I audible, visible? Everything is fine. So अब देखो, this is actually the 2025 paper. Is my voice reaching? Everything is fine. The slide is visible. So अगर आप देखोगे so 2025 पेपर में जो क्वेश्चन पैसेज आया था इसमें नीचे क्या लिखा, देखो, read it. An excerpt from chapter 2 Nationalism in India, Indian Contemporary World, NCERT. So they have taken from history book Civil Disobedience Movement, है ना, right? And they have asked a question from here. Okay, marks the beginning of civil disobedience movement. तो है Dandi March. I'm sure you must have heard it. ठीक है. Similarly, they had asked about true in the context of civil disobedience movement, Indian National Congress, civil disobedience movement, है ना. Then they asked about है ना mass movement of Indian industrialists, major things regarding civil disobedience movement. So that is why these are things which are from NCERT book are important. एक और last to last year पूछा था. I'm sure you must have heard जलियांवाला बाग मैसेकर, याद है? This is also a static portion. जलियांवाला बाग मैसेकर, ये भी एनसीईआरटी की हिस्ट्री बुक में है. ये these all are the things. इसमें पूछा था, पता है क्या पूछा था, कि जनरल डायर का फुल नेम क्या है. And really it was difficult question. General Dyer. Then they had asked about the date, है ना, 13th April 1919, the unfortunate incident happened. तो ये सब पूछा हुआ है. These things were asked previously. ठीक है. And that is why I am discussing it. And of course, Government of India Act is very, very important. So let us begin. Before that, a very thank you to all of you for having 20,000 subscribers. And one more thing, please subscribe to the channel अगर अभी आपने subscribe नहीं किया है. And today I will be discussing a lot about Governor Generals and Viceroy. ये सब word use करूंगा मैं. I will use these words, Governor General or Viceroy. So please, if you are not aware, please watch this class. You will get to know what are Governor Generals, Governor General of Bengal, Viceroys, etc. So, and of course, these are very, very important. Okay, Governor Generals and their achievements. इसको देख लीजिएगा, ठीक है? Okay, just search this and you will get it. Now, first of all, let us begin with the first question, and with the help of question and answer, we will discuss this class. The first question says, Government of India Act 1935 was passed by British Parliament, Imperial Legislative Council, Burma Legislative Council. It was Governor General's executive order. What is the right answer? बताइए. So Government of India Act 1935 किसने पास किया था? Yes, कुशाग्र सक्सेना. Very good. The right answer is British Parliament is the right answer to this question. A is the right answer. So basically ये law British Parliament बनाया था to have governance in India. Okay. So they made a law, and that is what you should know. Government of India Act 1935 was an act passed by the British Parliament and received royal assent, मतलब king or queen's signature, है ना, in August 1935. This is the longest act that the British Parliament ever enacted, and of course, these are actually later on split into two, and Government of India 1935 and Government of Burma Act. है. एक और चीज मैं बताता हूँ, इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ. What is Imperial Legislative Council? This was nothing but Parliament of India at that time. So, Parliament during British time. So, अभी Parliament of India make laws in India. So Imperial Legislative Council used to make laws at central level.
exactly like Indian Parliament, during the British time, Imperial Legislative Council was in India, in New Delhi, where they used to make laws similar to Parliament. ठीक है? Is it clear? ये याद रखिएगा. That is what you should be knowing. और आपने सुना होगा कि 1929 में Bhakteshwar Dutt and Bhagat Singh went there and put a small bomb also. It was not a very powerful bomb, but it was a light bomb just to raise the attention. उतना powerful नहीं था, लेकिन सिर्फ attention raise करने के लिए ये रखा था Bhagat Singh ने. Just have an idea about it. Now let us talk something further, है ना? In the background, so background was basically Simon Commission. I hope you are aware. 1928 में आया था, 1930 में gave the report. So when it came in India, the people started protesting by saying, Simon, go back. Why? अभी इंडिया आया था, मुंबई लैंड किए साइमन साहब. So Simon Saab, along with a few other members, they came just to give recommendation for constitutional changes or the governance changes. तो आपको ये बताना है कि जब वो इंडिया आए थे तो लोग साइमन गो बैक का नारा क्यों लगा रहे थे? Why were Indians raising slogan of Simon go back? Yes, Kushagra, very good. Because no Indian member was there. So all the members of Simon Commission were British, and Indians were saying that you are coming to India and setting up a commission to give a recommendation for governance in India. So you should listen to our perspective also. आप इंडिया आ रहे हो, इंडिया में रिसर्च कर रहे हो और फिर गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन दोगे इंग्लैंड में जाकर के कि गवर्नेंस प्रोसेस इंडिया में कैसे चले, तो आप इंडियंस की भी तो बात सुनोगे. So that is why we protested. Then round table conference लंदन में हुआ और व्हाइट पेपर पब्लिश हुआ. ये सब मिला करके इसका रिजल्ट था. So it resulted into Government of India Act 1935 after the discussion on Simon Commission, round table conference, white paper, etc. Okay, first thing इसमें क्या है? To come up with All India Federation, which actually practically did not come, but the recommendation was All India Federation, where there will be British Indian provinces and princely states voluntarily. अब आपको समझना पड़ेगा. So during British time, there are two types of state. एक होगा British India, this is ये होगा yellow वाला, United Province, this is Uttar Pradesh today. ये बिहार है ना, ये बंगाल, ठीक है, Central Province, which is now Madhya Pradesh. This is Madras Province, this is Bombay Province, ठीक है, ये और ये मिला करके बॉम्बे था, है ना, उस टाइम पर. Then ये पंजाब, this northwest. तो yellow वाला जो है ना, these are the states directly controlled under British. Okay, तो ब्रिटिश के सेंट्रल स्टेट्स थे, ब्रिटिश इंडिया के स्टेट्स. और जो बाकी ब्लू वाला है, ये अपने प्रिंसली किंग्स होते थे, ये किंग्स के अंडर में था. आई एम श्योर यू मस्ट हैव सीन दैट फिल्म लगान, जिसमें दिखाता है कि प्रिंसली स्टेट्स होते हैं, है ना. आई एम श्योर यू हैव लिटिल बिट आइडिया, थोड़ा तो आइडिया होगा. तो इन दोनों का आ गया, तो हुआ ये था कि प्रिंसली स्टेट्स ने ज्वाइन नहीं किया इसको, इस कॉन्सेप्ट को. सो दैट इज व्हाई ऑल इंडिया फेडरेशन डिड नॉट कम. ठीक है, दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग. तो कॉन्सेप्ट यही था कि दो तरह का इंडिया था उस टाइम पर. एक ब्रिटिश इंडिया, which were the provinces were directly controlled by Britishers, and princely states controlled by the kings or the local queens. Now the question is, the Government of India Act brought the concept of three list. जैसे आज three list है ना, we have three list currently: union list, state list, and concurrent list. Yes, मैंने आपको क्या बोला beginning में कि we have borrowed a lot from Government of India Act 1935. So much so that it is said that Indian Constitution is actually a shadow of Government of India Act 1935. Indian Constitution ने Government of India Act 1935 से बहुत सारी चीजें ली हैं. इतना लिया है कि कहा जाता है कि उसका शैडो है एक तरह से. तो जो थ्री लिस्ट है, इसका कॉन्सेप्ट Government of India Act 1935 में था. So currently in which schedule it is there? 7th schedule. I'm sure you must be aware of that. We have already discussed schedules. So 7th schedule of the Indian Constitution talks about three list. Now, so similarly in Government of India Act 1935, union list, state list, concurrent list mentioned, तब उसका नाम दूसरा था. तो union list के लिए कौन सा वर्ड लिखा हुआ था? Central list, federal list, imperial list, royal list. Yes, Koshagra Saxena, very good. The right answer is it was called as federal list. So Government of India Act 1935 ने थ्री फोल्ड डिविजन किया, है ना. फेडरल लिस्ट, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, देखो एक्चुअली यूएस में एक टर्म यूज किया था. आई एम श्योर अगर आप यूएसए का न्यूज़पेपर पढ़ोगे ना, तो आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, फेडरल गवर्नमेंट. हैव यू रेड दिस? फेडरल गवर्नमेंट मींस सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ यूएसए. ठीक है,
हालांकि फेडरलिज्म का मतलब कुछ और होता है, सेंटर और स्टेट हो, देयर शुड बी सेंटर एंड स्टेट हैव इंडिपेंडेंट पावर्स डिराइविंग फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन. बट व्हेन वी से फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल कोर्ट, फेडरल लिस्ट, वी आर टॉकिंग अबाउट सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, यू शुड रिमेंबर दैट. तो फेडरल लिस्ट मींस सेंट्रल लिस्ट. ठीक है, तो डिफेंस ऑफ कोर्स सेंट्रल लिस्ट में डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, मिलिट्री, ये सब फेडरल लिस्ट में होगा. प्रोविंशियल मतलब स्टेट लेवल लिस्ट में क्या क्या होगा, पुलिस, लोकल गवर्नमेंट एटसेट्रा. कंकरेंट लिस्ट वेयर बोथ कैन मेक लॉज, क्रिमिनल, मैरिज एटसेट्रा. सिमिलर थिंग इज देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ऐसा ही है ना, और नाम बस अलग है, बट it is there, center, state and concurrent list, but similar thing is there. Yes, so that is what you should know. So that is why Government of India Act is considered as a shadow of Indian Constitution, है ना, और vice versa I would say, है ना. The next is Government of India Act 1935 gave the residuary powers to which whom. अच्छा, पहले ये बताओ कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रेसिडुअरी पावर किसके पास है? और रेसिडुअरी लिस्ट तो नहीं होता, बट रेसिडुअरी पावर मींस where the center state or where it is not clear in 7th schedule, where nothing is mentioned in the schedule 7 schedule about that topic. Yes, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किसके पास है? वही पार्लियामेंट के पास, मतलब सेंट्रल के पास है ना, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट मींस द पार्लियामेंट कैन मेक लॉज. बट इन केस ऑफ दैट, in case of British time, what should be the answer? Government of India 1935 में residuary power was with in the hand of Viceroy. B is the right answer. Yes. कोशाग्रह सक्सेना, very good. तो अब देखना इस चीज में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में कि कुछ हो लेकिन तो भी वायसरॉय के पास बहुत पावर था. There were lot of powers in the hand of Viceroy. ठीक है, so ये आपको याद रहना चाहिए. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 gave residuary powers, है ना, residuary powers were given to the Viceroy. Which currently, I mean, in the Indian Constitution is in the hand of Parliament. ठीक है ना. So residuary powers were given to the viceroys. The next, we have discussed about schedules. आप सर्च करना जाके, and I have taught what are 7 schedule. And so go and read about 7 schedules of the Indian Constitution. है ना, हम लोग Imperial Legislative Council बता रहे थे कि this is nothing but like today it is a parliament. So something similar to that. It was the Parliament of India during British time. Similar to that, है ना. पार्लियामेंट इन इंडिया, इंडिया में जो पार्लियामेंट, मतलब जैसे इंडिया में पार्लियामेंट भी लॉ बनाती है, तो वहां पे इंडिया पार्लियामेंट लॉ बनाती थी इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, कंप्राइजिंग ऑफ 2 हाउसेस, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, इसको आज हम लोग राज्यसभा या काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं, एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, टुडे वी कॉल इट एज लोकसभा. वो स्टेट वाली लेजिस्लेटिव असेंबली की बात नहीं हो रहा, दिस इज सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, सो टुडे इट इज कॉल्ड एज लोकसभा, है ना, एंड दिस काउंसिल ऑफ स्टेट इज कॉल्ड एज राज्यसभा. सो दीस टू टुगेदर वर कॉल्ड एज इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल. ठीक है, which is equivalent to parliament today. Okay, yes, let's move on. Which of the following is correct regarding Government of India Act 1935? Please read and answer. It brought the Diarchy at central level, it abolished Diarchy at state level, the financial control was transferred from Secretary of State to Viceroy, that is from London to Delhi. All of the above. What is the right answer? I know थोड़ा सा slightly difficult question है, but yes, कोशाग्रह very good. The right answer is D. अब मैं इसको सबको explain कर देता हूँ. देखो पहले क्या था, the concept of Diarchy was at a state level. So हुआ क्या कि it was abolished here and it was brought at the central level. The concept of Diarchy. ठीक है, so both are correct. और फाइनेंशियल कर, देखो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्या होते थे पहले समझो. जैसे इंडिया को रूल करने के लिए द ब्रिटिश ऑफिसर वाज कॉल्ड एज वाइसरॉय, और व्हाट वी कॉल इट एज गवर्नर जनरल. ठीक है, सिमिलरली इन इंग्लैंड देयर वाज अ मिनिस्टर, सो प्राइम मिनिस्टर वर देयर इन इंग्लैंड एंड देयर वर डिफरेंट मिनिस्टर्स. बहुत सारे मिनिस्टर होते थे, तो उसमें एक मिनिस्टर होता था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट टू इंडिया, एंड दैट मिनिस्टर यूज्ड टू look into the matter of India. He was staying in England. England में रह के इंडिया का मैटर देखता था, because of course India was its territory. You got it? So that is what we call it as Secretary of State to India. Okay? So पहले इनके पास ज्यादा पावर थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का, तो फाइनेंशियल कंट्रोल को वाइसरॉय को पास दे दिया गया. So that is what also happened regarding money matters and all. So D is the right answer. All of the above is the right answer. अब मैं Diarchy को थोड़ा सा और डिस्कस करूंगा इन डिटेल. ठीक है, ऋतिक, तरंग, you were also right. D is the right answer to this question. है ना, आप देख सकते हो इट ब्रॉट डायरकी एट द सेंट्रल लेवल. एंड तो डायरकी का मतलब क्या हुआ, मतलब सेंट्रल लेवल पर
so central government means all India level पर there will be two governments. One is actually viceroy and another is the ministers elected ministers. इनका इलेक्शन होगा कुछ इनडायरेक्टली डायरेक्टली नॉट डायरेक्टली बट हाँ यू कैन से. और जो रिजर्व सब्जेक्ट्स है, रिजर्व सब्जेक्ट्स विल बी इन द हैंड ऑफ viceroys and transferred subject will be in the hand of the elected ministers. ठीक है, तो होता ये था कि जो रिजर्व सब मेन जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स आर डिफेंस एक्सटर्नल अफेयर्स ऑल एट द सेंट्रल लेवल विल बी कंट्रोल्ड बाय गवर्नर जनरल या वाइसरॉय. और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट जो वीकर उतना इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं होता था वो इंडियन मिनिस्टर्स को दे दिया जाता था. सो दैट इज व्हाट द आइडिया ऑफ डायरकी इज. ओके, सो दिस वाज ब्रॉट एट द सेंट्रल लेवल. इज इट क्लियर? We are not talking about state, center and provinces concurrent list. We are talking at central level list. जो central list थी उसको दो हिस्सा में split किया गया. ठीक है, you got it. The central list or the federal list got split into two. One is given to reserve subject to governor general, all the important ones. जो उतना important नहीं था ये Indian ministers को दे दी गई. आप रख लीजिए कि आप चलाइएगा इसको. And all the important ones were in the hand of governor general. You got it? ठीक है. और जो स्टेट में डायरकी था उसका खत्म कर दिया गया. मैं बताता हूं आपको, आप देख सकते हो यहाँ. I have told you that still all the powers were in the hand of governor general. And governor general had the powers, all financial powers, and defense, foreign affairs. It can look, and then it can of course appoint British and then army officers, RBI governors, railway board में related, है ना. The funding for British expenditure and foreign obligation loan repayment, at least 80% of federal expenditure would be non-votable. यानी बिना वोट किए वाइसरॉय अपने मन से डिसाइड करेंगे. ठीक है, एंड ऑफ कोर्स सो एक्चुअली वाइसरॉय हैड ओवरराइडिंग पावर्स. तो सब इनके पास इनके बावजूद भी इनको कुछ दिया भी गया मिनिस्ट्रीज तो भी, बट स्टिल ऑल द पावर्स आर इन द हैंड ऑफ वाइसरॉय. ठीक है, नाउ आई हैव जस्ट टोल्ड यू दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 अबॉलिश डायरकी एट प्रोविंस लेवल. प्रोविंस में खत्म कर दिया और सेंटर में ले आया. So the question is, the concept of diarchy in provinces were brought by which one? Which law? Sir, please respond as soon as you get time. Acha, you're talking about LinkedIn. Okay, Namo, I will answer. I will respond. I was busy, but I will check the message and respond. Okay. The concept of diarchy in provinces was brought by yes, Montagu Chelmsford reform. ये रिफॉर्म लाया गया तो उसके बाद वही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 पास किया गया. सो बी इज द राइट आंसर. सो देखो डायरकी जो है ना स्टेट लेवल पर भी लाया गया था. ठीक है, रिजर्व सब और ये ओरिजिनली 1919 वही जो मॉन्टागू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के रिजल्ट में लाया गया था. दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग. यस डेमो यू आर राइट, ऋतिक यू आर राइट. तो अब देखो स्टेट में मैंने क्या बताया, जैसे स्टेट से जैसे यूपी उत्तर प्रदेश है, इसमें क्या होगा, दो हो गए मिनिस्टर्स होंगे इलेक्टेड और गवर्नर होता था स्टेट लेवल पर. लाइक वी हैव ऑल इंडिया लेवल पर वी हैव गवर्नर जनरल और वाइसरॉय. सो एट एवरी स्टेट वी आर हैविंग अ गवर्नर एंड मिनिस्टर्स, है ना. ओके, अब इसमें भी वही मामला था. तो गवर्नर के पास सारा इंपॉर्टेंट पोस्ट जो जितना भी रिजर्व सब्जेक्ट था, ऑल इंपॉर्टेंट पोस्ट वेर इन द हैंड ऑफ स्टेट गवर्नर्स. स्टेट लेवल पे बात कर रहा हूं. व्हेन इट वाज ब्रॉट इन 1919, डायरकी वाज ब्रॉट एट स्टेट लेवल, है ना. तो जितना लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस, फाइनेंस, रेवेन्यू, इरिगेशन, जस्टिस सब ब्रिटिश गवर्नर के पास. और जो मामूली इंडियन मिनिस्टर्स को जो एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, लोकल गवर्नमेंट, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, इन लोगों को दे दिया गया. और इसको कहा गया रिजर्व ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, आपको ट्रांसफर कर दिया गया, है ना. सो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, रिजर्व सब्जेक्ट मींस द गवर्नर रिजर्व फॉर हिमसेल्फ. ब्रिटिश गवर्नर के मेरे पास रहेगा सारा इंपॉर्टेंट चीज. सो दिस वाज देयर एट स्टेट लेवल. अब नाउ द क्वेश्चन इज, जब आपने डायरकी अबॉलिश कर दी स्टेट लेवल पर, तब क्या हुआ? यानी अबॉलिश डायरकी एट प्रोविंशियल लेवल, है ना, और स्टेट लेवल. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि नाउ यू आर ट्रांसफरिंग ऑल द पावर फ्रॉम गवर्नर टू मिनिस्टर्स. यस, तो मिनिस्टर्स के पावर आपने बढ़ा दिए, नो डाउट, अंडर 1935 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ दैट, है ना. बट स्टिल गवर्नर के पास पावर था. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, है ना, मैं आपको दिखाता हूं. Yes, I'll show you. And a reserve state subject, na. The governor was supposed to govern at the state level पर, are supposed to act on the advice of the Indian ministers, है ना. And Indian ministers के पास now full power आ गया और इसको responsible government कहा जाने लगा. This is called as responsible government. That at state level we are having responsible government. ठीक है. And इसमें हो गया, ये सब तो हो गया.
But still, we have discussed about governor's special power. Lekin in certain matters, it is true that the power of the governor, since a diarchy was abolished at state level, but still, like a lot of things where the power were transferred from governor to ministers, but still governor enjoyed a lot of things. Still, it can do veto in some certain matters. It can override ministers. है ना, कहने को सब बात थी, लेकिन कहने का तो डायरकी अबॉलिश हुआ, लेकिन तो भी गवर्नर के पास पावर रह जाते थे. ठीक है, एक तरह से. Not only that, है ना, देखो, full responsible government was brought at the state level because diarchy was abolished. है ना. And British authorities retained the right to suspend a responsible government. और ये था section 93 of Government of India Act 1935. मतलब state level पर the ministers can be suspended. This is similar to current constitution. What article? Which article? Please tell me. होता ये था कि ब्रिटिश अथॉरिटी यानी गवर्नर जो है, although there were responsible government at state level, the diarchy was abolished. diarchy खत्म हो गई थी, गवर्नर के पास पावर कम हो गया था, लेकिन तो भी गवर्नर बहुत के पास ओवरराइडिंग पावर था. इतना था कि वो मिनिस्टर्स को सस्पेंड कर दे. सेक्शन 93 ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर. और ऐसा प्रोविजन इंडिया में है 356. वेरी गुड नामो. President rule is similar to that, and the idea of president rule, where governor rules for all practical purpose, is taken from Government of India Act 1935 here. समझ गए? Okay, that is what you should be knowing about. ठीक है. तो उसी के बाद जब Government of India Act 1935 आया, तो उसके अंदर 1937 में इलेक्शन हुआ था. I'm sure you must have heard. So Government of India Act 1935 के बाद the election happened, and in all 11 provinces and all. I hope you are aware 1937 का इलेक्शन, कभी आपको पढ़ने मौका मिलेगा तो पढ़िएगा 1937 provincial elections. ठीक है. तो कांग्रेस को कितना सीट आया, कृषक प्रजा पार्टी को. हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर्स, राइट ना वो. सो दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग अबाउट. इसमें और कुछ छूटा हो तो मैं बता दूंगा. हाँ, एक दो चीज और लाया, बाइकैमरल लेजिस्लेचर लाया. हाँ, एक दो चीज और पता होना चाहिए. चलो ये क्वेश्चन में आएगा, है ना. हाँ, लेकिन ये इंट्रोड्यूस जो डायरकी सेंट्रल लेवल पे लाने के एडवाइस तो दिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, लेकिन उसको इंप्लीमेंट नहीं किया जा सका. बट स्टेट लेवल पर जो 1935 में रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाया गया स्टेट लेवल पर, दैट वाज इंप्लीमेंटेड. सो द डायरकी वाज अबॉलिश्ड एट स्टेट लेवल. दिस कॉन्सेप्ट वाज इंप्लीमेंटेड एंड रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वाज ब्रॉट. ठीक है. तो स्टेट लेवल पर जो डायरकी लाने की बात थी, डायरकी खत्म करने की बात थी, वो खत्म कर दिया गया और रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ले आया गया. इसीलिए 1937 में इलेक्शन भी हुआ था. लेकिन सेंट्रल लेवल पर जो डायरकी लाने की बात थी वो नहीं हो पाई. इट वाज नॉट इंप्लीमेंटेड. ठीक है, बिकॉज ऑल इंडिया फेडरेशन का जो कॉन्सेप्ट है, जो मैंने आपको बताया, वो बना ही नहीं पाया. द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन वाज नॉट ब्रॉट बिकॉज प्रिंसली स्टेट्स डिड नॉट ज्वाइन. है ना, आपने शुरुआत ही बताया था. सो आई टोल्ड यू दैट. खैर, ये हो गया. आई होप इट इज क्लियर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय बाइकैमरलिज्म? Because this concept was brought at central level also, bicameralism, having two houses, having two power centers, viceroy and elected government, having two central authority, viceroy and secretary of state for India, none of the above. कौन सी बात सही है? Yes, Kushagra, very good. So currently the Parliament of India is also bicameral legislature, where there are two houses, Lok Sabha and Raj Sabha. So similarly, सेंट्रल लेवल पर हमने को बताया ना कि बाइकैमरल लेजिस्लेचर कॉन्सेप्ट यहाँ भी बोला गया. काउंसिल ऑफ स्टेट्स होना चाहिए, है ना, फेडरल असेंबली, मतलब वही कि समथिंग सिमिलर टू लोकसभा एंड राज्यसभा वुड बी देयर, है ना. और स्टेट्स में ऑलरेडी 14 में से 11 में बाइकैमरल लेजिस्लेचर था. सो द कॉन्सेप्ट वर ब्रॉट एट. अच्छा, इंडिया में हाउ मेनी स्टेट्स आर हैविंग बाइकैमरल लेजिस्लेचर? कोई बता सकता है? जैसे स्टेट्स में, नॉट एवरी स्टेट, wherever you will find chief minister, you will find legislative assembly and legislative council. ठीक है. But legislative council you will find wherever you will find chief minister in the states. But legislative council is hardly, I think, in 6 states. हर स्टेट में नहीं है. So as far as I could remember, UP, Bihar, then Karnataka, Maharashtra, and if I'm not wrong, Telangana and Andhra Pradesh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 states as far as I could remember. Yes, Kushagra. So bicameral legislature in India are there in few states, but center में we are having bicameral legislature. Now यही क्वेश्चन ना, ये वाला क्वेश्चन आप आंसर करो. Which of the following is correct regarding Government of India Act 1935? आप इसको आंसर करो. You will understand many things regarding it. It gave voting rights to all women. It had brought the concept of universal adult franchise. Right to vote was linked to the property ownership. None of the above. You can answer it with the help of common sense also. कौन सा सही जवाब है?
Please tell me. देखो थोड़ा सा कॉमन सेंस से सोचना फिर आंसर करना. देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इज ब्रॉट बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट, ऐसा सोचना. अब ब्रिटिश की सोच सोचना, थिंक ऑफ ब्रिटिश थिंकिंग, ब्रिटिश कैसे सोचते थे, फिर आंसर करो. अब आप सोचो, क्या आपको लगता है कि इतना पहले ब्रिटिश जो है आपको सबको राइट दे देंगे, राइट टू वोट एवरीवन को? डू यू थिंक? जस्ट इमेजिन. और हर आदमी, आप इमेजिन करो, कंस्टिट्यूएंट असेंबली वाज नॉट इलेक्टेड बाय यूनिवर्सल एंड फ्रेंचाइज. इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1946. ये भी यूनिवर्सल एंड फ्रेंचाइज से नहीं था. इसमें भी सबको राइट टू वोट का अधिकार नहीं था. आपको पता है? सो अंग्रेज दे देंगे आपको, ब्रिटिश दे देंगे यूनिवर्सल एंड फ्रेंचाइज सबको, इंडियंस को, वो भी 1935 में. डू यू थिंक सो? बी कैन नॉट बी द आंसर. इट विल गिव वोटिंग राइट्स टू ऑल वुमेन. लगता है आपको? वेरी डिफिकल्ट. So the answer was C. Right to vote was linked to the property ownership. ये पता है, capitalist. This is actually the supporters of capitalist. They talk about this कि जिसके पास जहां प्रॉपर्टी है, जैसे JS Mill, ये लोग ये सब टर्म यूज किए हैं. So these were like the British, those philosophers used to say कि जिसके पास जितनी प्रॉपर्टी, जहां प्रॉपर्टी, वहां राइट टू वोट होना चाहिए. The rich should have only right to property. Something similar to that. फ्रेंचाइजी वोटिंग राइट्स वाज एक्सपैंडेड. ये बात सही है कि वोटिंग एक्सपैंड किया गया, तो भी 10% ऑफ से ज्यादा लोग पॉपुलेशन को नहीं दिया था बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी टैक्स, एजुकेशन एटसेट्रा. नो यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, इसका तो सवाल ही नहीं बनता है. नो कांसेप्ट ऑफ दैट, है ना. सो दैट इज व्हाट यू शुड नो. सो सी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. द नेक्स्ट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज प्रीकर्सर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. ये देखते हैं आंसर कर पाते हो कि नहीं. आई एम वेटिंग फॉर एवरीवन्स रिस्पांस. प्लीज ट्राई टू आंसर. आप लोग आंसर कीजिए. तो ऐसे सोचो, देखो ये देयर इज नथिंग लाइक दिस आई हैव ऑप्शन सी आई हैव कोड फ्रॉम माय साइड. ये जो होता था ना, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया था बहुत पहले, उस वक्त बनाया गया था. उस वक्त कैलकाटा कैपिटल होता था, बाद में दिल्ली शिफ्ट हो गया. तो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया जो बनाया गया था, एस्टैब्लिश इन इंडिया 1937 अंडर द प्रोविजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. जब हम इसी की बात करें तो इसी का आंसर होगा. थिंक लाइक दैट. सो दिस एक्चुअली लेटर रिप्लेस्ड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ना, रिप्लेस्ड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. So B is the right answer to this question, है ना. ये आपको पता होना चाहिए, है ना. फेडरल कोर्ट वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, है ना. फेडरल कोर्ट वाज a judicial body established in 1937, function until the Supreme Court of India was established in 1950, है ना. So ये आपको पता होना चाहिए. ये 1774 में एस्टैब्लिश किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर. Now the next is which of the following is correct regarding Government of India Act 1935. यही क्वेश्चन आया, इसको स्टार मार्क कर लेना. आई वाज सीइंग, अब मैं पूछ रहा था ना किसी एमएचसीटी स्लैट किसी एक एग्जाम में या आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट इन सम लॉ एंट्रेंस एग्जाम दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड. थोड़ा सा घुमा के पूछा था, बट दीस 3-4 टॉप पॉइंट्स वेयर देयर. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से रिलेटेड. इट मींस दीस क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड अगेन. इस तरह क्वेश्चन पूछा हुआ है. दिस इज अ पार्ट ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. एक्चुअली इसमें क्या किया गया था, पहले आप इसको आंसर कर दो, देन आई विल एक्सप्लेन. Please tell me. Guys, please answer. The right answer is D, all of the above. Yes, कुशाग्र, right. अब देखो हम बताते हैं क्या है. देखो ये विकिपीडिया पे ही लिखा हुआ है. सिंध was separated from Bombay. Bihar, Odisha was split into Bihar and Orissa. Burma was completed separate from India and then was detached from India separate only. चलो एक एक करके बताता हूँ. अब ये देखो गौर से. The British Bombay presidency इसको कहलाता था. ये वाला these two और प्लस एडन. देखो यहाँ दिखाता हूँ. This region of Pakistan which is today Sindh, ये वाला हिस्सा और यमन का यहाँ पर एक जगह एडन where Mr. Mukesh Ambani was born. ठीक है. All three were together. This and this were together called as Bombay Presidency. Do you know this? ये आपको पता है?
तीनों बॉम्बे प्रेसिडेंसी का पार्ट था। तो पहले क्या किया गया, सिंध वॉज सेपरेटेड और एडन को भी हटा दिया गया। तो सिंध को अलग कर दिया गया बॉम्बे प्रेसिडेंसी से, एडन को भी अलग कर दिया गया, सो इट इज रिमूव्ड। ठीक है, सो दैट इज व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट, फर्स्ट थिंग है ना। सेकंड इज बिहार एंड ओडिशा स्प्लिट इनटू बिहार एंड ओडिशा, है ना। तो पहले काफी बड़ा होता था ये वाला बिहार एंड ईस्टर्न स्टेट्स, है ना। तो इसको बिहार और ओडिशा अलग कर दिया गया, दिस इज ओडिशा and this is Bihar, and this got split under government of India Act 1935. Okay. Third thing is Burma was completely separated from India. I hope you are aware. So this is Myanmar. Burma was part of British rule. So British कैसे rule करते थे? So they used to rule like that. देखो इसको हम लोग North East कहते हैं. You know why? Because this was called by British as South East. ठीक है? And they used to govern along with India. फिर 1935 में उन लोगों ने कहा कि चलो हम इसको अलग से गवर्न करेंगे, उसको अलग गवर्न करेंगे. So we will govern India separately and Burma separately. So इसीलिए उन लोगों ने कहा कि ये ऐसे हो गया और इसको नॉर्थ ईस्ट कहा जाने लगा. But logically speaking, that is why we say इसको नॉर्थ ईस्ट क्यों कहेंगे? Ideally we should call it as east of India. But now it is called as, because at that time they used to call this region as northeast and this as southeast. That is why even today also we call them as northeast. ठीक है, clear है? इस दोनों का गवर्नेंस प्रोसेस अलग कर दिया गया 1935 में. हियर आल्सो ब्रिटिश वर रूलिंग टिल आई थिंक 1947-48 के आसपास, बट एक्चुअली दे वर रूलिंग सेपरेटली, नॉट अलोंग विद इंडिया. ठीक है, ये भी हुआ इसके अंदर. एंड दिस वी आर डन विद, है ना. ये तो दिन बता ही दिया. दे एस्टैब्लिश फेडरल कोर्ट, है ना, 1937 में अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, एंड व्हिच वाज रिप्लेस्ड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया in 1950. ठीक है, ये पूछा हुआ है. दे गिव 4 ऑप्शंस एंड वन ऑफ द ऑप्शन दे गिव एक्स्ट्रा. And they said which of the following is not correct with regards to Government of India Act 1935. This is a previous year question of some exam, MHCT में या कहीं पूछा है, SLAT में या somewhere. I have seen this question. That is why I am telling you. Now other provisions, है ना, emergency power मैंने बता दिया. गवर्नर के पास, जनरल के पास सारे पावर होते थे. गवर्नर जनरल is at the central level and governor is at the state level. ठीक है, गवर्नर स्टेट लेवल पे होते थे, गवर्नर जनरल या वाइसरॉय जो होते थे वो सेंट्रल लेवल पर होते थे. बोथ आर सेम थिंग. कंट्रोल बजट, सारे फाइनेंशियल कंट्रोल इनके पास होते थे. ही कैन रिमूव मिनिस्ट्री, लेजिस्लेट बाय ऑर्डिनेंस, सारा पावर होता था, है ना. और सारे इमरजेंसीज पावर भी गवर्नर जनरल के पास होते थे, है ना. ब्रिटिश ऑफिसर्स के पास ही सारे पावर होते थे. डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, ऑल इंपॉर्टेंट, है ना, जिसको लोग कहते थे रिजर्व सब्जेक्ट्स, है ना. दैट इज व्हाट दे हैड टॉक्ड अबाउट, है ना. दीस आर द थिंग्स, है ना. डायरेक्ट इलेक्शंस वगैरह की बात हुई है ना. फिर सेपरेट इलेक्टरेट्स का कॉन्सेप्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टरेट्स व्हिच वाज ब्रॉट इन 1909 एंड 1919 कंटिन्यूड इन 1935 आल्सो. सो सेपरेट इलेक्टरेट्स, है ना, फॉर मुस्लिम्स, सिख, क्रिश्चियन एटसेट्रा वेयर देयर, है ना. इसमें तो फिर सेपरेट क्लास होगी. डिप्रेस क्लासेस पर सेपरेट इलेक्टरेट्स नहीं था बिकॉज ऑफ, आई होप यू आर अवेयर, पूना पैक्ट गांधी जी ने किया था. ही प्रोटेस्टेड अगेंस्ट मैकडॉनल्ड अवार्ड where the depressed classes were also given separate electorates. तो गांधी जी ने इसको अपोज किया था. इसीलिए depressed classes means जिसको आप today scheduled caste और दलित कहते हैं. So there were provisions, but Mahatma Gandhi protested that it will lead to disunity among Hindus, and that is why this separate electorate was not given. Okay, तो ये पता होना चाहिए. तो depressed classes, that is what you should know. फिर क्रिटिसिज्म वगैरह ये है कि कोई राइट्स, फंडामेंटल राइट्स वगैरह का मेंशन नहीं था. इंडियंस के पास कोई कंट्रोल नहीं थे, ये सब गवर्नर जनरल के हाथ में होता था, है ना. सो एंड इवन इफ वी हैव ब्रॉट प्रोविंशियल ऑटोनॉमी और रिस्पांसिबल गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल, स्टिल गवर्नर के पास सारा पावर होता था. आपने मिनिस्टर्स को स्टेट में सारा पावर दिया. रिस्पांसिबल गवर्नमेंट डायरकी यू हैव अबॉलिश्ड, बट स्टिल गवर्नर हैज ऑल पावर. ही कैन ब्रिंग अ सॉर्ट ऑफ प्रेसिडेंट रूल, है ना. सो जैसे आर्टिकल 356 टाइप समथिंग, है ना. दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग इट. फिर और एक है कि प्रीएम्बल नहीं था उसका कुछ. देयर वाज नो प्रीएम्बल. लाइक एवरी एक्ट हैज अ प्रीएम्बल, और इस तरह का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन था उस टाइम पर. तो आप प्रीएम्बल तो बताओगे. सो देयर वाज नो प्रीएम्बल एंड ऑल, है ना. देन बिल ऑफ राइट्स नहीं था, वही मैंने बताया कि देयर वाज नो राइट्स मेंशन्ड. सिटीजंस के कुछ राइट्स होते हैं वो सब नहीं मेंशन था. नो सेफगार्ड्स, है ना. डिजाइन टू एनेबल द ब्रिटिश टू इंटरवीन व्हेनेवर. तो मतलब ब्रिटिश जब चाहे इंटरवीन कर सकते थे, ना. देयर वाज सो मच इमरजेंसी पावर्स. ऑल द पावर directly indirectly were in the hand of governor general at central level and governor at the state level. तो ये सब जानना है ना. So these are the things you should be knowing. So this is all about today's class. Please subscribe to our channel, press the like button, share this video. Thank you everyone. Thanks for watching. Have a nice day.